that on the lines of the Wagah border, we have also started something at the Suchetgarh border, where we have similar exchange of salute in the evening. Suchetgarh border is the border. But having said that, जिस तरह से मनीष जी ने सारा सुनाया कि 5-6 अगस्त 2019 के बाद ये हुआ, वो हुआ, क्या किया, कुछ नहीं किया, और 370 अनुच्छेद हटाया, और क्यों हटाया? तो लेट मी फर्स्ट बिगिन बाय प्लेसिंग अ स्मॉल क्वेश्चन. क्या कांग्रेस पार्टी ऑन द फ्लोर ऑफ दिस हाउस आज ये कहेगी कि अगर वो वापस आए तो 370 वापस लाएंगे? हाँ, ये बोलो. So let's settle down this question. You don't say that because you know what the public sentiment is. So you want to beat about the bush and have it both ways. Yes, Honorable Minister, please address the chair. दूसरा, मनीष जी ने भी कहा, दादा ने भी कहा कि गृह मंत्री जी कह गए थे द स्टेटहुड विल बी रिस्टोर्ड. ये कब होगा? शायद कांग्रेस को याद नहीं है, पंडित नेहरू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कह गए थे कि ये घिसते घिसते घिस जाएगी अनुच्छेद 370, लेकिन 70 साल नहीं घिस सकी, हमने घिसाई. प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब बागडोर देश की संभाली, एंड ही शोड द करेज, द कन्विक्शन, द कैपेसिटी, एंड द लेजिस्लेशन वाज मूव्ड बाय द होम मिनिस्टर अमित शाह. तो मैं सिर्फ इतना आपको आश्वासन दे सकता हूं, टू ऐड टू, बिकॉज आई डोंट हैव टू add to what the Honorable Home Minister has said. He said that the appropriate time statehood would be restored. Can I take the permission of just making a small point that it will not take 70 years? आपने तो 70 साल लगाए 370 हटाने को, फिर भी हटा नहीं सके. हम 70 साल नहीं लगाएंगे, उससे पहले ही, as the Honorable Prime Minister, Home Minister has said, at the appropriate time it will be restored. As long as he is accusable. My friend Rajaji asked me, how long are you going to accuse Nehru? I said, as long he is accusable, as long generation after generation continue to pay for the follies and the Nehruvian blunders. हुआ क्या है? On a serious note, there is a vested interest in Jammu and Kashmir also, which survives, thrives, and flourishes in an atmosphere of mayhem, insurgency, terrorism, uncertainty. 5-10% वोटिंग हो, चुनाव हो जाए, सदस्य बन जाए, सदन के भी, लोकसभा के भी, विधानसभा के भी, सरकार बन जाए, and they flourish in an atmosphere of vacuum. और ये 370 का जाना सबसे ज्यादा उन्हीं की पीड़ा का कारण है. In fact, I said this earlier about 3 years back. I hope someday somebody would suggest that there should be a minimal threshold voting percentage for any candidate to qualify to become a member of the Lok Sabha. Yes. Otherwise, we'll have to bear with the 7%, 8% vote turnout members. Yes, and I'm sure Dada's party will support us when we do that. The TMC. और इसलिए, to keep the pot boiling, every day a new story is manufactured. The latest is only a few hours ago. And it also relates to what the subject that Dada mentioned, that of Kashmiri Pandits. Just around the time when this house sat in the morning, the Congress party ने एक बयान जारी किया कि कश्मीरी पंडितों का विस्थापन का कारण जगमोहन थे, कि जगमोहन ने उनको वहां से भगाया. And such an inhuman and insensitive observation of a historic tragedy, because I don't know whether we realize. नहीं, पहले उन बातों का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मालूम है आप भी यही बातें करेंगे.
The biggest, I think the only instance in the history of the world where a huge population of a community became homeless in their own homeland, refugees in their own country. And the biggest exodus possibly that has happened after that of the 1947 partition, when there was exchange of Hindu and Muslims and the rights followed. और ये बात जो कांग्रेस वाले कह रहे हैं, क्योंकि इनकी मेमोरी शॉर्ट है, ये सोचते हैं बाकियों की मेमोरी है, लेकिन वी हैव अ एलिफेंट मेमोरी, हमने तो काम ही ये किया. I vividly remember in early 90s when the exodus had just taken place, the same Congress party had said that Jagmohan has generated this exodus because he wants Kashmiri Pandits to go and get free plots in Jammu and Delhi. And that time also I had said, मोहसिन भोपाली एक शायर हुए हैं, उन्होंने बंटवारे के समय जब इतनी बड़ी संख्या में आबादी इधर से उधर जा रही थी और कत्लो गारत हो रही थी, तो तब भी कुछ लोगों ने व्यंग किया, तो उन्होंने एक शेर लिखा था कि बेसबब लोग बदलते नहीं मनसक अपना, तुमने देखा है जलता हुआ नशेमन अपना. जिस आदमी को ये कभी कल्पना ना की हो, तसव्वुर ना किया हो कि मेरे घर को आग लग जाए, वो आतिशे नजर हो तो उसका क्या मंजर होगा, क्या दृश्य होगा, वही आदमी इस तरह की संवेदनहीन बातें कह सकता है. कोई अपना घर नहीं छोड़ता. द मैनर इन विच दे वर आस्क्ड टू लीव देयर होम एंड हर्थ. And I don't want to go back because इन्होंने कहा Nehru, and I said that in the last debate also. If only Nehru had allowed his home minister to handle Jammu Kashmir as he was handling the rest of the princely states, I think we would not have arrived at a pass that we have. Yes, absolutely. Absolutely. And that is why in the spirit of good comradeship and a good cabinet collective responsibility, he allowed his own prime minister to intrude into his domain, which was naturally his domain as home minister. मोदी जी ने सरदार पटेल को वो रुतबा दिया, वो दर्जा दिया जो ना कांग्रेस दे सकी, ना टीएमसी दे सकी. अब ऐसा है, गांधी जी भी इधर आ गए हैं, महात्मा गांधी, पटेल भी आ गए, बाबा साहब अम्बेडकर भी आ गए, सुभाष चंद्र बोस भी आ गए, और नहीं मोहिता जी अब दादा भी इधर आ गए. Yes, please. और दादा भी आ गए. The question is, Yes, Minister. Minister, you are responsible. सभी है, सबका साथ सबका विकास. आपका भी विकास है. अब बेसिकली क्या हुआ कि दे आर लूजिंग देयर आइकॉन, दे आर सर्चिंग कि पटेल कहाँ, गांधी कहाँ, अम्बेडकर कहाँ, सुभाष कहाँ. But it had to happen because Modi ji has introduced a new political culture in this land. You have been seeking votes to come here. Who else not? All of us are here with vote, but not using vote as a vote bank to reach out where it is required. Not appeasement. And this is what we are talking in the context of Kashmir is absolute appeasement. National Conference के जज साहब बैठे हैं. What happened in 1987? This entire exodus was triggered by a rigged election, and आप कह रहे हैं कि जगमोहन ने निकाला, बीजेपी ने निकाला. राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला का अकॉर्ड था, आप साथ थे, इलेक्शन रिग हुआ, उसके बाद किलिंग हुई. स्क्वाड्रन लीडर खन्ना and others got killed by in their Air Force uniform, and the killers were still at large. The action has started against them only after the governor's rule, after it became UP. और कश्मीरी पंडित इसलिए वहां से निकला. Yes, Minister. लेकिन छोड़ी भी हम ही ने. लेकिन दाद दीजिए.
दाद दीजिए, कोई मजबूरी नहीं थी, हमने सत्ता त्याग दी जब हमें लगा कि हमारे सिद्धांतों का पालन नहीं हो रहा। जितेंद्र सिंह जी, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री a coalition, we have walked out of coalition by a voluntary decision, not under any compulsion. you are responding to all the queries, not making No, speech. sorry, Mr. Speaker, sir. So there were selective killings of the Kashmiri Pandits. Kill one, threaten 1,000. That was the formula being followed. Tikalal, Taplu, then another director from Doordarshan, just because he happened to be Kashmiri Pandit. So they had to leave their home and hearth and run away. But that apart, this has been triggered with this film called Kashmir Files, which has come in. Now, अगर वो जाएंगे भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा ही जाएंगे।